क्या यूएफसी फाइट्स भी स्क्रिप्टेड स्लैश फिक्स्ड होती हैं? मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती हूँ किसी को, but at the end of the day, you're a stunt man. One of the most frustrating things we still actually deal with is, what's the difference between WWE and MMA? And, MMA is not entertainment. And this is a real fight at the end of the day. There's nothing choreographed about it. Sorry, मैं बोलूँगी ऐसे बकचोदी से सब काम नहीं चलता है. You have to follow it up with wins in the cage also. कि आपने जेक पॉल का नाम लिया है. He is a trained athlete also. So hey guys and welcome back to another exciting of Revision podcast, the number one Indian combat podcast. तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एंड आई नो मुझे बहुत ज़्यादा मिस करा है तुम लोगों ने, क्योंकि 2 सीरीज़ मैंने बैक टू बैक मिस करी है. आई एम सो सॉरी फॉर दैट ब्रो, आई एम सो सॉरी, बट वी हैव अ सरप्राइज़ फॉर यू गाइज. जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि हम एक बैंगर सरप्राइज़ के साथ आ रहे हैं, और सरप्राइज इज़ नॉट स्मॉल बडी, इट्स अ ह्यूज वन. ठीक है, तो हमारे साथ कौन है अभी आपको स्क्रीन पे पता लग जाएगा. तो आदि एक बार भाई स्क्रीन स्विच कर देना. तो भाई हमारे साथ है कृष्णा मैम एंड आयशा मैम. दे आर दी फाउंडर्स ऑफ MFN, आर ओन ब्रांड ब्रो, आर ओन ब्रांड. हमारा खुद का कॉम्बैट का एक डेस्टिनेशन है इंडिया, जो कि मतलब मोस्ट एंशियंट भाई सिविलाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ कॉम्बैट. तो मैं दोनों मैम का बहुत दिल से स्वागत करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू वेलकम यू बोथ एंड थैंक यू सो मच. आप लोगों ने हमारे मेल को रिस्पॉन्ड किया एंड दिस इज़ अ वेरी बिग शॉक टू अस. और मैं बहुत नर्वस हूँ आप दोनों से बात करने में, बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि लोगों को यहाँ पे जो ऑडियंस है उनको पता लगेगा कि इंडिया में कितनी बड़ी चीज़ें हो रही है मैम. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you so much, guys. Thank you for having us. थैंक यू सो मच मैम. सो मैं तो इतना ज़्यादा नर्वस हूँ, मैंने अभी तक कुछ बोला ही नहीं. मच मोर नर्वस देन चलो वी आर गुड टू गो नाउ एंड देयर सो मच टू टॉक अबाउट. ठीक है, आज तो नया नहीं बताएगा तुम्हें क्या क्या होने वाला है. और आई एम सॉरी टू, क्योंकि मैं बहुत टाइम से था नहीं. ठीक है, 2 पॉडकास्ट लास्ट नए अकेले संभाल लें, सो सॉरी फॉर दैट, बट अब मैं वापस आ गया. ठीक है, तब चिल मारेंगे. चलो ठीक है. एंड मैम, दोनों मैम हमारे साथ है. तो मैम सबसे पहले तो एक हाथ जोड़ के अपॉलॉजी अगर मैं कुछ वैसा डिलीवर ना कर पाऊँ, बिकॉज पहली बात तो आई एम वेरी नर्वस. एंड सेकेंड मैम, MFN 13 आ रहा है, आप लोगों का शो आ रहा है जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे. उसके लिए भी मैं रजिस्टर कर चुका हूँ एंड आई एम कमिंग देयर टू मीट यू गाइज इन पर्सन. एंड आई वॉन्ट टू सी कि कितना मेगा इवेंट वो होने वाला है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दैट. तो मैम थोड़ा बहुत मैं आपसे, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि इंडियन फैंस को कॉम्बैट के बारे में पता है, बट उन्हें प्रॉपरली कॉम्बैट के बारे में सेम टाइम पे पता भी नहीं है. और इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट टू केटर इन द वर्ल्ड. सब यहाँ पे इंडिया के मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं. एंड आप लोगों ने फ्यूचर चैंपियन प्रोड्यूस कर दिया. अंशुल भैया इज़ ऑलरेडी इन UFC, ही इज़ इन टू द बिग लीग्स राइट नाउ. और वो यहीं से ग्रेजुएट होके गए एक तरीके से, यहीं से उन्होंने अपना एक स्टेपिंग स्टोन रखा और आप लोगों ने उन्हें इतना आगे पहुँचाया है. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क यू, बहुत बेसिक क्वेश्चन, एक नई ऑडियंस हमारे पास है तो उन्हें नहीं पता MMA क्या है. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इस स्पोर्ट के बारे में कि ये कितना ब्यूटीफुल स्पोर्ट है. I think, one of the most frustrating things we still actually deal with is, what's the difference between WWE and MMA? And, MMA, it's not entertainment, right? WWE is entertainment for you. Yeah. MMA is real life fighting. But then what differentiates MMA from, let's say an ordinary street fight is the fact that there are absolutely highly trained professionals who have the skill set, to get into the cage and do what these guys and girls do. And, beyond that, we also have the third man in the cage, the referee, who makes sure he's there for the fighter's safety. Right. I think it's important to note that everyone involved in the sport, because it's highly dangerous considering it's a full combat sport, has to be trained in order to do what these guys and girls do, and trained in all martial arts, right? So MMA is mixed martial arts, so it's not just your wrestling or striking. It includes everything, from Muay Thai, kickboxing, wrestling, Brazilian Jiu-Jitsu. It's the overall package. I think it's the ultimate combat sport. So you're not just using your fists, you're not just using your legs, you're using elbows, knees,
And at the end of the day, you're only protected, with, I mean, if you're a man, a groin guard and your mouthpiece and 4-ounce gloves. So if you ask me, there's no sport like it. It takes an absolute beast of a human being to do what these guys and girls do, a very special kind of human being to do what these guys and girls do. And I have, mad respect for all athletes across the globe. But if you ask me specifically mixed martial arts, it's not just their physicality that sets them apart. It's more so their mental strength that I truly admire and I'm very inspired by. And I feel blessed to be, so up close with these guys and girls because it's motivation for me every single day. What do you want to say, ma'am? Well, I think Krishna ne to she has covered the whole passion part of it for us. हम सब respect करते हैं, हर athlete को respect करते हैं. But MMA एक बहुत बहुत ही special sport है. Yes. और एक बहुत special athlete चाहिए जो जिसके पास वो heart and mind है, who can be an MMA pro fighter, for sure. So for us, I mean, as a family, हम सब बहुत athletic हैं in different ways, and Tiger Krishna have been star athletes school से, captain of their team, ये team, वो team, everything. But we could have chosen any sport, but हम MMA को choose किया है because we all feel so passionately about MMA. Yes, ma'am, definitely. And this is something कि ये sport अगर इंडिया के अंदर आ रहा है, and we know our heritage, we are from the heritage of like a huge fighting culture. हम लोगों ने बहुत fights किए हैं. We are warriors. We are warriors. Exactly. Definitely. Yeah. And यहीं से मेरा एक क्वेश्चन यहाँ से रेज हो रहा था कि अभी जो इंडियन MMA फैंस हैं who are eager to become MMA fighters, so what's the initial step उनके लिए, या फिर उनके लिए क्या प्रोसेस रहता है to become what they want to become? So what we have going on with Matrix Fight Night, we've created a pathway for amateur guys and girls to then eventually make it to the main stage. So I don't know if you guys have heard of MFN Contenders. We have our MFN Contender show, which is a 3-day tournament that we host, and fighters from all across the country register. They fight their way to an MFN contract, and that's what they're rewarded by. That's what they're rewarded with by the end of those 3 days. So we have MFN Contenders coming up now in December, December 7th, 8th, 9th actually, and we're expecting about 1,000 registrations. Yeah. Wow. So Great. the growth has been immense to see, man. There are so many, I believe so many skilled athletes in the sport that, that haven't really had a platform before Matrix Fight Night to showcase their skill, and then take it to the next level and fight professional to then be recognized on a global level. So, our Contenders is the ideal pathway for any amateur in the sport who wants to make it professional and take it to the next level. And it's something, I'm very proud of. Some of the guys and girls that we found on our Contenders is that they're actually, very skilled, and just in 1 or 2 fights on the actual main MFN stage, they've already made their mark. So I'm really excited about the new talent in our country, and I'm excited for them to finally get the recognition that they deserve. Yeah, ma'am. Guys, really felt great to hear that. We had MFN Contenders Hyderabad में, and उस event में we had 600 amateur fighters, guys and girls, who had registered. And we have given pro contracts to 12 of them. जिसमें से I think four of them already made their pro debut. And now in MFN 13, you will see more of them making their pro debuts on MFN 13. Yes, and जैसे कृष्णा ने कहा, in December 7th, 8th, 9th, द्वारका में, that beautiful, amazing new facility which is the government has announced. I think yesterday only they announced it. Modi ji announced it.
So we are going to be having our event there, and we are expecting more than 1,000 athletes to sign up. वाओ मैम, दैट्स Oh, रियली wow, अमेजिंग। man. वो सुन के ही मतलब एक Yeah. एक टाइप से गूज़बम्स आ रहे हैं कि Hmm. मतलब 1000 इंडियन Actually. ग्लैडिएटर्स विल कोलाइड एंड Hmm. उनमें से आप लोग Yes. उन लोगों को वो देने वाले हो, कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हो। और जैसा कि हम लोगों ने बात किया, द प्रोडक्ट इज बियॉन्ड आर इमेजिनेशन, ठीक है। एंड ये हर एक एलिमेंट रखता है। बेसिकली दिस इज द सर्वाइवल। जितना इंपॉर्टेंट रिंग में लड़ना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कैंप होता है, जो कि आपको मेंटली एंड फिजिकली बहुत ज़्यादा मतलब आपको प्रेशर में रखता है। और ये बहुत इमोशनल स्पोर्ट है एट द सेम टाइम। लोगों को लगता है इसमें विल बहुत। स्ट्रांग है, बट इमोशंस आपके इतने ज़्यादा होते हैं बिकॉज आप अपनी फैमिली से दूर होते हो। जब आप एक बहुत ही ज़्यादा वनरेबल पोजीशन में होते हो, आपके लेग हैंड सब टूटे हुए होते हैं, मेंटली खुद को स्ट्रांग रखना, क्योंकि सामने वाला ओपोनेंट आपको मेंटली भी इन अ लाइक राइवलरी दे ट्राई टू ब्रेक यू मेंटली एज वेल। तो वो सारी चीज़ें के साथ ये स्पॉट करना, आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ देम। एंड मैम हमारी ऑडियंस बेस से भी काफ़ी सारे फाइटर्स हैं जो कि देखते हैं हमें, तो आई वुड रिक्वेस्ट देम कि प्लीज़ गो एंड भाई वहाँ पे जाके जाइए और MFN जो हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम रोशन करो अपना। एक मैम एक छोटा सा क्वेश्चन था, एक फाइटर की स्किल्स के अलावा उसका करेक्टर होना, खुद का एक यूनिक करेक्टर होना, जैसे हम जानते हैं कॉनर मैकग्रेगर का खुद का है, ठीक है, एंड अलग अलग फाइटर्स हैं, शुगर शॉन है उसका खुद का एक करेक्टर। तो करेक्टर होना एक फाइटर में कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट रखता है अकॉर्डिंग टू यू गाइस? बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केज में ऑब्वियसली हाईली स्किल होना जरूरी है, और यू हैव टू बैक योर टॉक ultimately in the cage, right? But as a fighter, it's part of your job to also sell your fights. क्या हुआ था UFC, तो let's take UFC as an example. They have been there for 30 years. Yeah. पर actually turning point क्या था UFC के लिए? It was Conor McGregor. And because the guy knew how to sell his fights, you know. तो आप अगर देखेंगे तो UFC में they have more than, मेरे हिसाब से, if correct me if I'm wrong, over 800 fighters signed है in UFC, but you don't know all the names of all the 800 fighters. Definitely. You know the names of the guys who have such great personalities. They present themselves so well as a fighter. And the pay-per-view, हमारे इंडिया में अभी तक pay-per-view culture नहीं है, because our fighters have not reached the level yet. बहुत सारे fighters हैं जिसके बहुत सारे fan following है, but pay-per-view वाला level जो है ना, वो अभी तक आया नहीं, because how will you get thousands of guys to pay to watch a fight unless they love you as a fighter? You are a superstar as a fighter. सिर्फ सॉरी मैं बोलूंगी ऐसे बकचोदी से सब काम नहीं चलता है. You have to follow it up with wins in the cage also. You know what I mean? But it's a part of, to be a great fighter, एक पूरा package होना जरूरी है. Right. You have to look good, you have to talk good, and you have to fight good. Yeah. In fact, I want to make a point over here. You know, because we just recently announced that Jason Solomon, the Delhi Don, he's going to be fighting for the welterweight belt at MFN. And, you know, some people are confused about the decision of why he gets the shot or the immediate shot after being a little inactive, you know, for a while. And it's exactly what my mom just said, you know, your job doesn't just start and end in the cage. There's a whole package and a whole process that goes into it. And although he hasn't been active in the cage, you know, in recent times, he's still been able to be one of the most relevant names in the MMA industry. Love him or hate him, you know, up until today for all these years, and that speaks volumes. So, you know, if you manage to stay relevant and interesting, opportunity will follow. Yeah, definitely ma'am, because at the end of the day, अगर आप चाहते हैं कि इस स्पोर्ट के अंदर लोग इंटरेस्टेड हो तो पहले आपको पेपर व्यू सेल करने पड़ेंगे. तो बिल्कुल तो वो वाली चीज़ वी अंडरस्टैंड टोटली. और मैंने कल डेली डॉन की वो देखी थी पूरी प्रोफाइल, एंड आई गॉट इट कि आप लोगों ने उन्हें क्यू कार्ड पे डाला, एंड
ट्रस्ट मी गाइस, वो बेस्ट डिसीजन था उन्हें उस कार्ड पे डालने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा इट एलिमेंट भी होना चाहिए, हम लोगों को चाहिए दैट इट एलिमेंट, जो कि बैठा के रख सके, क्योंकि हमेशा ऑडियंस इस प्रोस्पेक्ट से नहीं आती है कि आई वांट टू सी माय फेवरेट गाय विन. समटाइम्स दे आर विद द लाइक ऑरा इन द माइंड, आई वांट टू सी दिस गाय लूज एंड गेट बीट अप. तो वैसे वाली मेंटलिटी से भी आते हैं लोग, तो वो काफ़ी अच्छा लगा मैम. एंड आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू गाइस कि जैसे कि इंडिया इज़ अ वेरी ह्यूज मार्केट एज वी ऑल नो, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट WWE, तो WWE ने काफ़ी अच्छे से कैप्चर कर लिया ऑलरेडी. उनकी सबसे हाईएस्ट व्यूअरशिप इंडिया से जा रही है, एंड सबसे ज़्यादा व्यूअर्स इंडिया से है. अगर हम कमेंट सेक्शंस भी देख रहे हैं, हर चीज़ में वो लोग जैसे रिपोर्ट्स निकालते हैं. एट द सेम टाइम WWE एंड UFC का मर्जर हो चुका है, दे आर नाउ TKO ग्रुप टुगेदर. TKO, हाँ. तो वो मर्जर भी हो चुका है उन लोगों का, तो अब बिजनेस काफी एक्सपेंड होगा. एट द सेम टाइम दे विल ट्राई टू कम इन इंडिया. तो MFN कैसे उनके साथ कोलैबोरेट करेगा, या फिर उनसे कैसे कॉम्पीट करने वाला है, उनसे कैसे हम अलग आइडेंटिटी बनाने वाले हैं हमारी? गाइस, आई थिंक compete की बात नहीं है, बिकॉज MFN इज अ इंडियन प्रमोशन फॉर इंडियन फाइटर्स. ये हमारी USP है और ये हमारी ताकत है, आई थिंक, यू नो. तो अगर UFC को यहाँ आना है या किसी एनी अदर प्रमोशन, वी वेलकम देम. एंड मैं compete नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कोलैबोरेशन करेंगे, यू नो. तो जैसे कृष्णा ने कहा कि हमारे इंडिया में इतना टैलेंट है, पर वर्ल्ड वाइड इतना नोटिस नहीं हुआ until MFN came into the picture. Definitely. So because we gave such a good platform, mega show, you know. So slowly everybody, all the promotions, actually they watched our shows, you know. So and then they always reach out to us directly or comment karte ko, we love this fight, we love that fight, you know. So abhi now we have reached a situation where UFC, PFL, ये लोग सब are interested in picking up fighters from MFN. Wow. तो जैसे we have always said in the past कि we want our best guys and girls to go to the next level. Next level मतलब worldwide, global level. So we are giving that advantage to our fighters here to shine here, get noticed by the big promotions globally, and then go there as champions. You know what I mean? Yes, ma'am. पहले क्या होता था past में, they used to pick up Indian fighters and they were going there as tomato cans, literally, you know. So now it's a different story. Our Indian guys and girls are stars. They will go there as stars. Yes. तो अपने लिए ये बहुत अच्छा प्राउड फील होता है. जैसे we see Anshul now, I hope his fight goes really well in October. Definitely. And we'll all be cheering for him, obviously. So but Anshul is the start of this journey. Definitely. And I'm sure a lot of fighters from MFN are going to really shine worldwide now. Wow, that's Ma'am, great. I wanted to ask कि वो क्या रीज़न है जो कि इंडियन फाइटर्स को लिमिट करता है इंडिया तक की, वो इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादातर नहीं जा पा रहे हैं? आपको क्या लगता है फ्रॉम योर POV? I think honestly, you know, up until now, before Matrix Fight Night, there hasn't been a promotion, you know, at that level to give these guys that exposure and that experience to then take it to that level, you know. With, you know, we haven't just brought the correct infrastructure with our gyms, MMA Matrix, but we've also given them a platform through Matrix Fight Night with the correct platform, the correct marketing, you know, the correct backing and support, our fighter first mentality, actually, you know, caring about these guys and girls and you know, understanding their value as athletes. I think, you know, the fact that there wasn't a relevant promotion before Matrix Fight Night definitely hindered their growth. And with Matrix Fight Night, we've also introduced, you know, foreign opponents, international talent, to come and face these guys and girls on our platform to see where they actually stand in the world, you know.
if you keep, I mean, the MMA community is so small in India, you know, everyone knows everyone, everyone's fought against everyone maybe 3-4 times already. So if you continue to stay comfortable in that circle, you're never going to grow. So with Matrix Fight Night, they've gotten the opportunity to be exposed to the rest of the world to then, you know, help their own growth. मैम बाकी एक छोटी सी और चीज़ थी जो मैं थोड़ा सा ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मेरे को खुद को इस ब्रांड के बारे में पता लगा थ्रू सोशल मीडिया कि योर सोशल मीडिया टीम इज़ डूइंग करंटली दे आर डूइंग वेरी अमेजिंग जॉब एंड मैंने शायद शाम आनंद जी की फ़ाइट देखी थी जहाँ पे ग्रज फाइट थी उनकी अगेंस्ट फॉरेन ईरानियन फाइटर थे, वो कहीं के बाहर के थे, Egyptian. हाँ Egyptian guy. तो Needle. या तो जो मासेस थी इंडियन मासेस दे नो हबीब, ठीक है, तो उनको लगा वो एक दागिस्तानी फाइटर ही है, तो उनको ये था और ये दागिस्तानी फाइटर्स आर ऑलरेडी टेकिंग ओवर दिस कम्युनिटी, तो वो थोड़ा सा लुक अलाइक थे. अगर मैं एक बेसिक ऑडियंस की बात करूँ जो मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आए थे कि भाई देखो दागिस्तानी फाइटर को इंडियन फाइटर ने हरा दिया ऐसा करके लोगों को, बिकॉज दे आर सो बेसिक इन टू दिस स्पोर्ट और उन्होंने उन्हें मैग्नेट किया. तो आप लोग जैसे इंटरनेशनल कैलिबर फाइटर्स लेके आ रहे हैं जो कि कहते हैं कि हम लोग उन लोगों ने कुछ अचीव किया है, इजिप्ट के फाइटर्स वगैरह हो गए या फिर बाहर के हो गए, एंड फिर इंडियन फाइटर्स उन्हें डोमिनेट करके अपने देश का झंडा लहराते हुए बोल रहे हैं कि गाइज यू आर टॉकिंग अबाउट अस, वी कैन फाइट, सी वी कैन फाइट, एंड हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड को रूल किया है. तो बेसिकली जो MFN करके अभी दिखा रही है मेरे हिसाब से आने वाले 10 साल में भी कोई नहीं कर पाएगा, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग एज इन्फ्लुएंसर्स और इस कम्युनिटी के होके हम इस चीज़ को इतना हाइप कर दें कि बाहर के लोग भी हम लोगों का वो डंका सुने कि या वी एग्जिस्ट एंड वी वांट टू कम्पीट. Thank you. And That's amazing. Thank you. थैंक यू सो मच मैम. एंड मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक चीज़ मैं पूछ लूँ पहले, एक छोटा सा. पूछो. कृष्ण मैम, मैं आपसे पूछना था कि कब आप MMA फैन बने? Good question. I have been following the sport for almost all my life, actually. I'd say close to 20 years. I've been a huge admirer of the sport. I think, you know, my brother, he's been practicing the sport from a very young age, but he was never a follower the way I've been a follower. You know, I do my research. I wake up every UFC morning for the fights to watch them live. I follow, you know, the journeys of these athletes very closely, and like I said earlier in our chat, it's very motivating, you know. And for me, it helps me push myself every day, seeing these guys and girls, you know, do phenomenal things. So yeah, I mean, I'm very blessed to have found the sport at a very young age, you know, and even the little bit that I practiced it, I honestly believe it instills, you know, a sort of discipline and focus in you that I believe nothing else really has. And as a woman, especially, you know, it gives you a sense of security and confidence to know that you can protect yourself at all times. So who's your favorite UFC fighter? I am gonna have to say, I'll give you my reason before I tell you why. Okay, so this guy is particularly my favorite because, number one, I believe he has the highest fight IQ that exists in the game. Number two, I believe sport and entertainment go hand in hand, and he's the perfect balance of both of those things. You know, he's real. He's relatable. He's a human that's made mistakes, but it's still, you know, he's had his shares of ups and downs. He's been, you know, at the complete lowest of the low in the sport, and then come back and retain the championship belt. So I have to say John Jones is my absolute favorite. Wow. Yeah, that man is terrifying at the same time. He's a very gifted baddest athlete. man on the planet, Yeah, hands definitely. down. Yeah. Basically अभी बॉक्सिंग मैच भी होने वाला है टाइसन फ्यूरी एंड फ्रांसिस एंगानो का, एंड जो भी विनर होगा वो allegedly will fight with him, जॉन जॉन्स. तो he is a legend. 100%, I believe that. Yeah. तो मैम इसी से रिलेटेड मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि अभी बाहर अगर हम लोग देखते हैं फॉरेन कल्चर के अंदर वो चीज़ नहीं है, दैट इज इन्फ्लुएंसर्स फाइटिंग इन द केज, जो बहुत बड़े नाम है ऑलरेडी, दे आर फाइटिंग देयर. और अब तो हमने सुना है कि PFL ने भी टाई अप कर लिया है काफ़ी, लाइक जेक पॉल से उन्होंने टाई अप किया है. जेक पॉल वहाँ पे एक अलग डिवीजन वो लोग चलाएंगे उधर, जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स आपस में बैक एंड फोर्थ करेंगे, और बेसिकली वहाँ पे लोग सिर्फ
एंटरटेनमेंट पर्पज से ज़्यादा आ रहे हैं कि वो लोग फाइट कर रहे हैं, हाँ ये ऑलरेडी फेमस है, वो ग्रज फाइट्स होती है। तो क्या MFN भी ऐसा कुछ मॉडल इंट्रोड्यूस करेगा फ्यूचर में जहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंसर्स ग्रज फाइट्स कर रहे हैं कार्ड पे? I don't know. I think एक बात तो मानना पड़ेगा कि आपने जेक पॉल का नाम लिया है. He is a trained athlete also. Yes, ma'am. ऐसा नहीं कि he's just some tapori who's jumping into the cage and behaving like a monkey. He is a trained athlete. Yeah. So I don't know हमारे influencers community में if we have any hidden talent for MMA, please make yourselves known to us. And why not? Let's see. I don't know. I think, if we were to have I call those exhibition bouts. Exhibition, yeah. Right. I would probably step up and be the first. Wow. That's a breaking news. Double quoted. Wow, man. You got your clickbait. Yeah, I got my clickbait now. Now I'll like be putting you into the cage against some other influencer. So wow, that's amazing. thumbnail मिल गया. हाँ, thumbnail मिल गया. मैम वी ऑल नो कि MMA फैंस और प्रोफेशनल रेसलिंग फैंस इनकी हमेशा बीफ चलती रहती है, कॉज स्क्रिप्टेड स्पोर्ट, रियल स्पोर्ट. तो मुझे जानना था कि कोर MMA फैंस, प्रोफेशनल रेसलिंग फैंस या इस इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं. Actually, what he meant is he is saying the professional wrestling fans and the core MMA fans, they are same at some point and very different at the same point. Like Dana White quoted it when the TKO like vice president said ki this sport, I want every WWE fan to be a UFC fan and every UFC fan to be a WWE fan. Then Dana White re-quoted and said, this is the most foolish thing I've ever listened in my life. This can't be happening. These sports are at some point they are same, but at the same time the both audience are different. So what's your take on that? See, I think definitely audience is definitely different, no doubt about it. I think to be an MMA fighter, therefore an MMA fan, it is somebody to be an MMA fan is somebody who realizes what it takes to be an MMA fighter. You have to, जैसे कृष्णा ने बहुत अच्छी तरह से explain किया था right in the beginning, to be an MMA fighter you need to be a very, very special kind of person to get into the cage. This is तुम्हारा training का level जो है is the highest level, ठीक है? And this is a real fight at the end of the day. There's nothing choreographed about it. And whereas with WWE, yes, you obviously have to be very fit. You have to be an athlete who can make... What is the best example I can give you? Apna filmy fighting. You understand? Right. It's choreographed, right? It's not real, 100%, man. Although... Yeah, exactly. So there are, even in our film heroes, there are levels. Most of the heroes have duplicates who are doing the stunts for them. In our case, Tiger, most of the stunts he does himself because he's trained to be able to do it, right? Yeah. और वैसे भी उनका duplicate मिलना बहुत मुश्किल है because उनका style ही अलग है of action. But for WWE, it is, I think, if मैं disrespect नहीं करना चाहती हूँ किसी को, but at the end of the day, you're a stunt man. Yeah. And the fight is a choreographed fight. Definitely, ma'am. You have to be very fit to be able to take the falls and make it look so real and so exciting. But at the end of the day, it's not a real fight. The way an MMA fight is a real fight. So that's the difference. मैं थोड़ा agree करना चाहूँगी देना के साथ, on this subject. Yeah, I think it's a very pure, form. MMA is a very pure, sport, compared to anything else. Yeah.
वी एग्री विद यू, इस पॉइंट पे पूरा एग्री हम लोग करते हैं। दोनों स्पोर्ट्स की ब्यूटी बहुत अलग है, टारगेट ऑडियंस भी बहुत अलग है दोनों की। टारगेटेड ऑडियंस बहुत डिफर करती है, वो लोग ज़्यादा केटर करते हैं बच्चों को, दे आर लाइक केटरिंग टू द किड्स। और फिर जब तुम मैच्योर हो जाओ तो तुम ग्रेजुएट हो जाओगे तो यू कैन गो फॉर UFC देन। तो वो चीज़ें हैं, दोनों ऑडियंस का माइंडसेट काफ़ी अलग है। मैम 2-3 क्वेश्चंस और है रिलेवेंट इस चीज़ से। पहली बात, कॉनर मैकग्रेगर इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस इन इंडिया, उसने बहुत बार लव दिखाया इंडिया के लिए। तो क्या MFN विल बी द प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग एक कोलैबोरेशन देख सकते हैं द नोटोरियस वन से in near future? I think, honestly, there is no MMA in India without Matrix Fight Night. So anyone from that side of the world who wants to come to India, do business in this particular industry, I mean, there's nothing better and nothing beyond Matrix Fight Night. डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। अभी जैसे हमने पहले बात की UFC या MMA फाइटर्स और प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री की, तो ऐसा क्यों होता है कि अपनी प्राइम के बाद जो MMA फाइटर्स हैं वो प्रोफेशनल रेसलर्स बनना चाहते हैं या उस फील्ड में चले जाते हैं? Now more than getting to professional wrestling, they're getting into professional boxing after retiring from MMA. Yeah, definitely. I think now it goes MMA, boxing, bare knuckle fighting, and then wrestling. WWE, yeah. Actually, they want to earn money na after their retirement. It's just for the money. Exactly. And everyone Absolutely. wants to earn. हाँ, because of मुझे लगता है WWE की एंटरटेनमेंट की वजह से वो ज़्यादा मेन स्ट्रीम है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर के लिए वो जाते हैं। बिल्कुल, 100%. So ma'am, and then in that sense, they're able to make these exhibition bouts and get these massive personalities from the sport together to then blow it up, So like I said, this goes hand in hand, right? The more you work on your profile throughout your career and build yourself up, the more money you're able to make later on in life. डेफिनेटली मैम। सो एज अ कोर ऑडियंस, जितने भी ऑडियंस देख रही है और हम भी हैं, तो अगर हमें आना है MFN फाइट्स देखने, तो क्या प्रोसीजर रहता है पूरा, हम लोग कैसे आ सकते हैं देखने फाइट को? आप हमारे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, एंड as soon as we put the link for registration, please come register and come. And अगर आप register नहीं कर सकते, anyway it's all free by the way guys. Wow. Okay, we are not charging any ticket. और क्या चाहिए तुम्हें? And if you still are not able to register, then please come directly for the show from wherever you are, and you're most welcome. We have 18,000 capacity in the stadium, so we have to stick to the rules and regulations. So first come, first served. But if you still can't register, then just please show up, and we will definitely try and accommodate you. मैम फ्री के अंदर मिल रहा है, और मैंने देखा है द मैसिव सेटअप, एवरीथिंग इज सो मैसिव। एंड फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ इट, और फिर मैं आई वाज सर्चिंग ऑन इंटरनेट कि टिकट प्राइसेस क्या है, द फर्स्ट थिंग वाज व्हाट आर द टिकट प्राइसेस, व्हाट आर द पासेस, मैं देखता हूँ, एंड वहाँ पे कुछ मिला नहीं। फिर थोड़ा और रिसर्च करने के बाद पता चला कि अभी तो हमें केटर किया जा रहा है फ्री में, हम फ्री में वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्पॉट देख पा रहे हैं, वो भी इस लेवल पे। सो मैम अ ह्यूज बो डाउन टू यू गाइज कि आप लोग ये लेके आए हो हमारे इंडिया के लिए एंड फ्री में। सो गाइज जो भी देख रहे हैं, एंड यू गाइज आर फ्रॉम नोएडा, अभी मैम बताएंगे MFN 13 के बारे में हम पूछेंगे, इवेंट होने वाला है, फिर इंडियन टूर के बारे में पूछेंगे कि मैम का क्या है आपकी कंपनी का टूर के बारे में। तो गाइज प्लीज़ रजिस्टर, गो एंड रजिस्टर, हम लोग यहाँ पे भी एक लिंक नीचे डाल देंगे, तो गो रजिस्टर फॉर फ्री, वहाँ पे जाके देखो और अपनी जो क्रिएटिवनेस है वो लगाओ, वहाँ पे कुछ मतलब खुद ही कस्टमाइज करके कुछ मर्च बनाओ अपने फेवरेट फाइटर के लिए। तो मैम 1-2 क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में। एक ऐसी फाइट आप डिफाइन कर दीजिए जो कि आप बोलो कि MFN की आप ये फाइट देखो, यू विल बी द फैन, आपको समझ आ जाएगा MFN क्या है, कोई एक ऐसी फाइट। For me, it is the main event, Sanjeev Budwar versus Sham Anand. Wow. It is Sham is undefeated on MFN except for his pro debut, which he lost to Sanjeev Budwar. And Sanjeev Budwar is one of my favorite fighters. He is एक ऐसा बंदा है जो जिसमें डर का सवाल ही नहीं उठता है, और वो कभी नहीं पूछता कि मेरा ओपोनेंट कौन है, मुझे कभी फाइट करना है। जस्ट उनको एक फोन जाता है कि संजीव इस तारीख को फाइट है, तू रेडी है? हाँ मैं आता हूँ माता, मैं आ रहा हूँ। That's it. मेरा ओपोनेंट कौन है आज तक कभी नहीं पूछा। Wow. And I think for me, I mean, hands down, Abdulazim Badakshi. I think he is the absolute
biggest prospect we have coming out of our side of the world. Love him or hate him, he brings the fans, he brings the supporters, he brings the following, and he brings the skill set to back it up. राइट मैम. एंड मैम ये क्रॉसओवर्स, कंट्री क्रॉसओवर्स देखने में ना काफ़ी मज़ा आता है. जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच भी है, तो वो एक एज एन इंडियन ना यूनाइट कर देता है हम सबको. या ये तो देखना ही है. तो मैम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि यहाँ पे MFN के अंदर भी, बिकॉज एंटरटेनमेंट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी. हम देखना चाहते हैं एंटरटेनमेंट कॉम्बैट, और एक बहुत बड़ी ग्रज फाइट निकला या फिर बहुत एक एंटरटेनमेंट फाइट निकला. और मैंने देखा है पास्ट में भी बहुत सारी एंटरटेनिंग फाइट्स MFN ने दी है, क्योंकि कल रात को आई वॉज लाइक binge watching all the shows, all the podcasts, and I was researching for it, and I was really invested in it. कि I was just like looking towards the matches, और कब 9 से 2 बज गए रात के पता नहीं चला, and I was really entertained a lot. And thank you so much to you guys, your family, you guys are doing amazing. And मैंने already register कर लिया है, and I'm coming Noida straight from Jaipur. और मैम इंडियन टूर हम कब देख सकते हैं? इंडियन टूर, पूरा एक टूर हो इंडिया में जहाँ पे शोज हों या फिर कुछ ऐसा. So we actually, the venues we choose primarily depends on the fight card. So, once I finalize the fight card is when we choose the venue. Depending on the athletes that we have on that specific card, we want to cater to the place that has the most following depending on the athletes. Yeah, definitely. So I think once the fight card's finalized is when that part of things come into play. Wow, but definitely we would love to have the shows all over India. Northeast is also a great venue potentially, with all the new fighters coming in from Northeast. South has been great for us. Yeah. I think Bangalore would be will be a lot of fun, I think. And Delhi, Noida, all this whole belt, fans are amazing over there, so always good fun to have a fight night there. Yeah, ma'am, that's really amazing. And ma'am, I'm definitely coming to see. And what do you want to tell guys about MFN 13 जो कि अभी अक्टूबर में हो रहा है, तो आप उसका छोटा सा एक ब्रीफ दे दीजिए. I think for MFN 13, we chose to bring it back to the exact same venue because it's been our biggest venue till date for Matrix Fight Night. Yeah. And we saw, with our last event, we saw that we had a live crowd of just under 10,000 people. So, I mean, it was a no-brainer to bring it back, right? Yeah, absolutely. It showed the growth of MMA in our country, and it's something we're so proud of, Yeah. And ma'am, we will try our best कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा कट्टर ऑडियंस आपके तरफ लेके आए. और MFN 13 में शायद आप लोग विटनेस करोगे द मोस्ट कट्टर ऑडियंस, द मोस्ट लाइक इन्वेस्टेड ऑडियंस ऑफ कॉम्बैट. एंड आवर टीम इज़ गेटिंग रेडी टू like come to MFN 13. And ma'am, can you please tell the date to the audience, किस डेट पे MFN 13 है? October 28. Yes, so October 28. Also, we're running a couple of fan contests. You'll see that on our social media. So a lot of you guys will have the chance to sit in VIP, and have a better view of the cage. I mean, you guys definitely don't want to miss these fights. I feel like, the card's going to be full of finishes. We have some really tough guys and girls on this particular card. So it's going to be very exciting. You want to be close to the action. So stay tuned for that. Stay tuned to our social media page, and you guys can definitely participate and hopefully see you in VIP. ओ भाई, वहाँ पे तो बैठना ही है. ठीक है अब भाई, हम तो तैयार हो रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट की नोटिफिकेशन ऑन करके. MFN के जितने भी हैंडल्स हैं they'll be. एंड मैम, आपको भी ऑल द बेस्ट इस सब के लिए, जो भी आप इन फ्यूचर भी करने वाले हो. अच्छा हाँ, नयन ने अभी कट्टर ऑडियंस की बात की थी, तो कट्टर ऑडियंस मेरी जो ऑडियंस है वो प्रोफेशनल रेसलिंग ऑडियंस है. ठीक है, तो उनका हमेशा कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन रहता है. ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये उनका क्वेश्चन हमेशा रहता है. तो आप इसे प्लीज़ क्लियर कर दो कि क्या UFC फाइट्स भी स्क्रिप्टेड / फिक्स्ड होती हैं? या MMA फाइट्स कुछ? Definitely not, bro. Like this is real life fighting, and anything can happen at any time, and these guys and girls know that before they get into the cage, and they have to be prepared for anything at any time. यस मैम, डेफिनेटली. और ये जो पर्टिकुलर पॉडकास्ट थी, ये हम लोगों के लिए, सबके लिए माइंड ओपनिंग थी. द वे यू बोथ एक्सप्लेन द स्पॉट, और जिस तरीके से यू गाइज आर रनिंग इट. एंड आई नो आज से 5 साल बाद जब ये स्पॉट बहुत ज़्यादा मैसिव हो जाएगा ना,
we will be calling you as the family who gave birth to Indian MMA properly, जिन्होंने एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि मैम फाइटर्स तो हैं बट उन्हें वे नहीं पता. बेसिकली होता है ना कि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो पहले आपको प्री बोर्ड्स देने होते हैं, तो वैसा आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जिनको पूरी चीज़ें पता है. एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग इस स्पॉट के लिए डेफिनेटली हमारे इंडियन ब्रांड के लिए चेयर अप करेंगे. अगर सामने कोई भी खड़ा हो, चाहे वो UFC हो, TK हो, वी विल बी ऑलवेज बिहाइंड MFN और झंडा लेके खड़े होंगे कि या हमारा ब्रांड है, इसे देखना है और इसे वर्ल्ड वाइड करना है. थैंक यू सो मच टू योर फैमिली. थैंक यू सो मच मैम, आपने मेल देखी एंड यू गाइस केम हियर. सो व्हाट्स योर लास्ट थॉट ऑन द पॉडकास्ट एंड द फ्यूचर ऑफ MMA? बस एक लास्ट लाइन आपसे सुननी है. एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं फॉर MFN और हमारे फाइटर्स जो भी ये लोग पूरा मेहनत करके आ रहे हैं, आप फैंस फॉलोअर्स के बिना हम कुछ भी नहीं हैं. तो प्लीज कीप गिविंग अस योर लव, गिव अस योर सपोर्ट, एंड विद योर हेल्प वी विल कीप ग्रोइंग and our boys and girls will keep growing. And आपने एक बहुत अच्छी बात कहा that it's a matter of pride for our country. तो मैं बोलूँगी जय हिंद. जय हिंद मैम, थैंक यू सो मच. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. So we'll wrap this podcast and डेट आपको पता लग गई ऑडियंस. Now you know what to do. अब जाना है और रीगैंग को पूरा जाके सिस्टम हैंग कर देना है वहाँ पे और दिखा देना है कि यप ये इंडियन कॉम्बैट है, दिस इज भारत कॉम्बैट कम्युनिटी, और हम लोगों को दिखा देना है सबको ऑल ओवर द वर्ल्ड. जैसा कि मैम और इतना ट्राई करा, फ्री है भाई तुम लोगों के लिए, फ्री के तो जाओ भाई, टूट पड़ो उस पे फ्री का सामान, इतना अच्छा. तो थैंक यू सो मच एंड वी वुड से bye. Bye. Thank you. Let me switch you off.